Welcome back students to your social studies class. Let us continue our explanation of the chapter. See, yesterday we had done till the temperature zones and I have explained to you how temperature zones are different with other parts of the earth. Now coming to the last page of the chapter where you have to differentiate between torrid zone, temperate zone and frigid zone. So let's start from the first point, that is torrid zone. It lies on both sides of the equator between Tropic of Cancer at 23.5 degree north latitude and the Tropic of Capricorn at 23.5 degree south latitude. See, टॉरिड जोन जो है हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ से स्टार्ट होकर यहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ जाके एंड होता है, दैट इज 23.5 डिग्री साउथ. तो इक्वेटर लाइन के नॉर्थ पार्ट से लेके साउथ पार्ट तक जो भी पूरा एरिया है इस डिग्री से, दैट इज योर टॉरिड जोन. Now coming to the temperate zone, it lies between the Tropic of Cancer at 23.5 degree north and the Arctic Circle at 66.5 degree north in the northern hemisphere. See, temperate zone northern hemisphere में 23.5 degree north से start होता है और end होता है 66.5 degree north. Same as it is southern hemisphere में 23.5 degree south से start होता है और end होता है 66.5 degree south. So ये इतना part जो है वो दोनों का temperate zone है. Now coming to the last one, that is the frigid zone. In the northern hemisphere, it extends from the Arctic Circle 66.5 degree north pole to the 90 degree N. This is called north frigid zone. तो फ्रिजिड जोन की बात करें, सी इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ तक, नॉर्थ पोल तक जो भी पूरा एरिया है दैट इज योर फ्रिजिड जोन नॉर्थ. एंड सेम एज इट इज इन द सदर्न हेमिस्फीयर जो भी आपका एरिया है 66.5 डिग्री साउथ से लेकर 90 डिग्री साउथ पोल तक, वो सारा पार्ट आपका है फ्रिजिड जोन साउथ. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज द जोन बिटवीन द करेक्ट इक्वेटर. The zone between the equator and the Tropic of Cancer is called the North Torrid Zone, and the zone between the equator and the Tropic of Capricorn is called the South Torrid Zone. See, it is very simple. जो जितना भी जोन इक्वेटर लाइन से 23.5 डिग्री नॉर्थ तक आएगा वो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो वी विल कॉल इट नॉर्थ टॉरिड जोन. एंड जो सदर्न हेमिस्फीयर में है वी विल कॉल इट साउथ टॉरिड जोन. The second point of temperate zone is the temperate zone in the northern hemisphere is known as north temperate zone and one in the southern hemisphere is known as south temperate zone. This is also very relatable with the torrid one. तो जो भी पार्ट 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 66.5 डिग्री नॉर्थ तक रहेगा इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दैट इज योर नॉर्थ टेम्परेट जोन. एंड सेम एज इट इज विद द साउथ टेम्परेट जोन विच स्टार्ट फ्रॉम 23.5 डिग्री साउथ till 66.5 degree south. Now the second one point of frigid zone is in the southern hemisphere it extends from the Antarctic Circle 66.5 degrees south to the South Pole 90 degrees south and is called the South Frigid Zone. Now the third point of torrid zone is the word torrid means very hot and dry. The general climate of this zone is hot, humid and wet. To the torrid word, the meaning of this word is very hot and dry. And the place which remains very hot बहुत humid होती है and after humidity it receive very high rainfall also. Now temperate, what is the meaning of temperate? Means mild, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा ना ही बहुत ज़्यादा गर्म, जैसे कि गुनगुना पानी हम यूज़ करते हैं काफ़ी बार, ठीक है. तो इट इज़ वेरी माइल्ड बिकॉज नीदर इट इज़ हॉट नॉर इट इज़ cold. See, the meaning of temperate is mild. The temperate zone experiences a climate that is cooler and drier than that of the torrid zone. Now last one point of frigid zone is the frigid zone is an extremely cold region which is mostly covered with ice and snow. And now if we talk about frigid zone, so this zone is extremely cold throughout the year and it is mostly covered with ice and snow. See students, here I have written, I will give you the PDF of this page. Here I have written some countries
which are found in in torrid zone, temperate zone and frigid zone. See, in torrid zone there are so many countries like Mexico, Malaysia, Thailand, Taiwan, Burma, Sri Lanka, India, Bangladesh, Ghana, Brazil, Argentina. Okay, now see, India is also in torrid zone as well as in the temperate zone. The upper part of India is in temperate zone, but the lower part of the India is in temperate zone. ऐसी काफ़ी कंट्रीज़ हैं जो बीच में से जिनका डिवीजन होता है, तो उनका आधा पार्ट टेम्परेट जोन में रहता है, आधा टॉरिड में रहता है, और काफ़ी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो आधा टेम्परेट जोन में होती हैं और आधा पार्ट उनका फ्रिजिड जोन में रहता है. सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. सी, कंट्रीज इन टेम्परेट जोन, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं यहाँ पे जो मैंने फेमस और बहुत ज़्यादा आपको कन्वीनियंट रहे इसलिए मैंने कुछ कंट्रीज़ लिखी हुई हैं. कंट्रीज़ विच इज़ इन टेम्परेट जोन आर USA, कनाडा, न्यूजीलैंड, चाइना, जापान, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल, Turkey, India, etc. See, India was in torrid zone also. As I told you, the lower part of India is in torrid zone and India is in temperate zone also. Now the last one is countries in frigid zones. These are Canada, Greenland, Finland, Iceland, Norway, Sweden, Russia, Antarctica, Denmark, etc. So all these countries which are in frigid zone, they are extremely cold throughout the year. I hope the chapter is clear to you all, and if you have any query, any problem, any confusion, then do feel free to contact me. Thank you. Keep revising.